大家好，一个印度小伙来了一趟中国之后，回到印度彻底改变了自己的世界观。很多人问中国的是不是比印度落后50年？他去回答说，现在连美国都被中国甩了好几条街，印度不能比了。接着我们就来看一下他到底是怎么回答的。चाइना कैसा लगा आपको? सिंस आप यूएस चाइना दोनों घूम चुके हो और दोनों कंट्रीज में ही आजकल सुपर पावर बनने का कंपटीशन चल रहा है और इंडिया पता नहीं क्यों दावेदारी में आता है, पर हालांकि हम हवाबाजी में नंबर 1 है ही हैं, पर रियलिटी आप अगर बता पाओ। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में कितना कंपैरिजन है ना, ये मैं आपको इस बात से बताता हूँ कि यूएस भी चाइना के आसपास नहीं है। अब आप समझ लो इंडिया कहाँ है, बोलने की ज़रूरत है नहीं है ना। मैं शंघाई में था इस साल, मैं टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ का स्काईलाइन बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बाद मुझे सबसे अच्छा स्काईलाइन टोरंटो का लगता है, और है भी ठीक है। स्काईलाइन देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो भाई, वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुंच गया। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, चोंगचिंग चले जाओ, ग्वांजाओ चले जाओ, शेंजन चले जाओ, चेंगडू चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेम ही लेवल है भाई। और मैं आपको, ये तो हो गया चलो कि मेरे को ऐसा दिखा, और आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ऑटोमेटिक टैक्सीज हैं, रोबोट्स पानी देने आते हैं होटल में, सब सच है। कुछ और फैक्ट्स बात करते हैं। होमलेसनेस दिखाई नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखा। चोरी चमारी दिखी नहीं। मैं हॉस्टल में था, $10 का हॉस्टल था, कितना 800 रुपये। हॉस्टल के अंदर साफ सफाई इतनी ज़्यादा थी कि वो वॉशरूम के अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि क्या बढ़िया खूबसूरत, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है और इतना क्लीन है यार। वो सीट अपने आप उठ जा रही है, अपने आप नीचे चली जा रही है, गर्म हो जा रही है, हाथ डालो साबुन आ जा रहा है, हाथ डालो हवा चल रही है, हाथ डालो पेपर नैपकिन आ जा रहा है, इतना साफ सुथरा। अंदर हॉस्टल का रूम भी साफ सुथरा, आपका जो बेड है वो भी साफ सुथरा। नीचे एक पूरा लॉबी एरिया है जहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठ करके अपना गेम खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ बैठ करके एडिटिंग कर रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। फिर अचानक से सबके मूड बना, चलो आओ खाना खा करके आते हैं। तो मैं उठा कि चलो खाना खा करके आते हैं। मैं अपना लैपटॉप समेटने लगा, बैग में डाला, बोला इसको रहने दो यहाँ पे, चलो। फ़ोन उठाया और सब निकल गए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्यों? बोला कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा? इट्स नॉट अबाउट कि मॉनिटर हो रहा है, कैमराज लगे हुए हैं भाई, लोग ही नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि लोग ही ऐसे हैं। यूएस में ये पॉसिबल नहीं है भाई, यूएस में ये पॉसिबल नहीं। यूएस के हॉस्टल में तुम छोड़ करके आ जाओ सामान, कोई ना कोई तो उठा ले। आपकी गाड़ी तोड़ दी।其实呢，现在的印度也是有很大的进步的。以前呢，总是觉得中国不如印度发展的好，现在大多数印度人可以认清现实问题，中国确实非常强大。一直以来经常贬低中国的贾康姐，现在也是一改画风，看清现实，只是还有一股十分不服气的劲，搞不明白为何中国可以甩印度好几条街，印度为什么发展不起来呢？现在我们就来看看贾康姐到底有多疑惑。Winning it, China. Chinese exports have shattered records. The latest data is out. It shows China has a trade surplus of over $1 trillion. $1 trillion. This has never happened before. And the year is not even over yet. This data covers just 11 months, January to November. So by the end of 2025, China could end up with an even bigger number because they're selling more than ever. And they're selling more despite the trade barriers. Trump has slapped tariffs on them. Exports to the US are down by 29%. Europe and Japan have imposed restrictions. Even developing countries are tightening rules on Chinese goods. And yet, Chinese exports are breaking records. How are they doing it? What is driving this export boom? Well, one big reason is China's own economy. Inside China, spending is down. People are saving more, the economy is slowing down, job creation is stagnating, the property market is still in crisis, developers are struggling with debt. So people aren't buying enough. Fewer goods are selling at home. What does China do with the rest? It exports them. It dumps the surplus in global markets. And the result is an export surge. That is the first factor. That is why exports are booming. The second factor is price. From cars to chemicals, from machinery to electronics, China has been undercutting the world. They offer cheaper goods, so they sell more. Plus, the Chinese currency is weak. That's the renminbi.
their currency. It has remained weak for years, and that gives China a big pricing advantage. Some reports say the renminbi is undervalued by nearly 30% against the euro. And a weaker currency helps Chinese exports. It makes them cheaper overseas. That keeps the demand high even during a trade war. That is how China is selling more to the world. And what are they selling? Well, they're selling pretty much everything, but the biggest jump in sales is from cars. And we're not talking about EVs, not electric vehicles. We are talking about petrol cars. China is exporting them. It is exporting petrol cars at record numbers. In 2020, they exported just over 1 million petrol cars, but this year, 2025, they've already sold the world 4.3 million cars. That's a 4-fold increase in just 5 years. And who's buying these cars? The developing world, countries in Latin America, Southeast Asia, Africa. China has also received more orders from West Asia and Eastern Europe. This is boosting export numbers. Plus, Beijing has found new ways around the trade restrictions. In some cases, it sells semi-finished products. The final assembly is shifted to another factory in another country. In regions like Southeast Asia, in Mexico, even in Africa, China sends the products to these countries, unfinished products. They are finished in these factories, and then they're shipped all over the world, including to the US. So these goods avoid direct tariffs, but they are still very much Chinese. Long story short, despite Trump's efforts, Beijing's dominance on global trade remains intact. But India is a different story. India has been trying to wean itself off Chinese goods. The effort began after the border clash in 2020. India ran campaigns to buy local, but those campaigns are yet to deliver because India's trade with China is more lopsided than ever. Again, look at the numbers from 2024-25. Imports from China crossed $113 billion. And exports to China? Just a little over $14 billion. The India-China trade gap is almost $100 billion. That's the biggest trade deficit India has ever had with any country. If New Delhi wants to fix this gap, it must learn from Trump's failure. Trade barriers alone won't work. What India needs is creative policy making and stronger industries at home. India should be able to make products that can compete globally. Because China is not just ahead, it is pulling further away, and at this rate, the gap will be very hard to close. 好了，看完贾康姐的视频，我们应该说一下，当年特朗普高喊让美国再一次伟大，把全球贸易想成一场靠加关税就能赢下来的比赛，但现实比口号要冷得多了。关税没把美国推上去，反而让中国在全球市场越跑越快。这些数据背后呢，其实说明一个简单的道理：国际贸易不是靠谁吼得大声，也不是靠谁堆的壁垒高，而是看谁真的能把产品做到最好、最稳，做到最便宜。现在中国出口猛涨，一个重要原因就是国内需求偏弱，工厂产能太大，企业必须往外找市场。在这种压力下，中国把多出来的产能全都释放到全球去，结果呢，直接冲开了各个封锁，美国加码，欧洲加码，一些发展中国家也限制，但都挡不住中国产品的优势，性价比高，品质稳定，替代性强，汽车、机械、化工、电子，几乎每个领域，中国都开始重新掌控主动权。反观印度，嘴上喊了好多年，减少对中国的依赖，结果进口中国越来越多，出口却停滞，甚至更少。原因不是喊口号喊得不够响，而是根本性的产业基础没打牢。你没有强大的制造业，没有能拿得出去的产品，再多的关税也没有办法改变在全球供应链里面的位置。到头来，贸易逆差只会越来越大。这场所谓的贸易战，真正的胜负从来不是靠谁发脾气、谁放狠话，而是靠谁能一直保持硬实力。美国选错了方向，印度还在原地思考，而中国却在稳扎稳打，越走越快。在全球化的舞台上，靠封锁不可能变强，只有真正的产业能力，才能让一个国家在未来有话语权。好了，今天的视频我们就到这里了，感谢大家观看。
也记得关注我们，记得点个赞哦。